Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jiv Jago. Come on. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Only sweet. Madhuram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Madhuram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bolo. Open it to the verse, please. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Madhuram. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. Bolo. Hare Hare. Radha Maragopara Re. Radha Maragopara Re. Prabhupada, Jaya Prabhupada. Hare Bol, Hare Bol.
Parampara pranams, please. Krishna Pasaya Bhutale. Shmati Bhakti Vedanta Shravani Tinamane. Te Sarvati Devi Gauravani Pracharane. Devasi Shashanyavari Paskatya Desitana. Om Agana Dhanandasya. Chun Minitam Gena Tasmai Sri Gurave Namaha. Sri Chaitanya Manobhistam Stapatam Gena Bhutale. Swayam Rupa Kadamayam Dharate Svaparadhyam. Vandeham Sri Guru Sri Jata Parakamalam. Ikurum Vaishnavanscha. Sri Rupam Sagajatam Sagara Raghunatam Didamstam Sadevam. Sarvaitam Savarutam Bharajana Saitam Sri Krishna Chaitanya Devam. Sri Radha Krishna Para Sahagana Lalita Sri Vishakana Shansam. Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagapate. Gopesha Gopaka Kanta Radha Gosate. Tapta Kanchara Gaurangi Rare Vrindavaneshwari. Vrishabhanu Saudi Devi Pranam. Vanchakalpa Grubhascha Sindhu Bhaivacha Patitanam Pavanibhyo Vaishnavyo Namaha. Jai Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Dvaita Gadadhar Shivasri Gaur Bhaktivinoda. Hare Krishna 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. So we have to set this up for recording. No, I mean for screen I have to read Vaishnav calendar. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare. Hare Krishna Hare Rama Rama Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama Rama Hare Hare. So today is the extremely auspicious day in which Srila Prabhupada arrived in America. Haribol! So we're going to start today by reading his poem which he wrote on the Jaladuta in the Boston Harbor. This poem is really important. Listen carefully. It is the mood of a devotee who is saturated in Krishna Prem and who is an ocean of good qualities, 100% free of false ego and pride. Very deep love for Krishna. Listen carefully, and you can hear it. Take the wax out of the ears. So, also, it is demonstrating, besides extreme humility, all good qualities of a most perfect Vaishnava. So we'll begin. My dear Lord Krishna, are you so kind upon this useless soul? But I do not know why you have brought me here. Remember that he's now he's in Boston Harbor.
That's eastern United States. वह ईस्टर्न यूनाइटेड स्टेट्स है। That was his port of arrival. तो वहाँ पे वो पहुँचे थे। He'd been on the ocean for over a month. वो लगभग सागर के ऊपर 1 महीने तक रहे थे। 2 heart attacks. और 2 उनको हृदय में आघात भी आए। So he's looking out now at the great and mighty United States of America. और अब जो है वो बाहर निकल के देख रहे हैं जो अमेरिका। I'm being sarcastic, of course. मैं थोड़ा सा sarcastic में बता रहा हूँ। And it was probably not, I mean, it's a port, you know, not very pretty, you know, probably no trees. और वो एक पोर्ट पे आए थे बाहर, तो वो कोई अच्छी स्थान नहीं है बाहर। No flowers, not like Vrindavan. और वृंदावन के भांति बिल्कुल भी नहीं। So he says, I do not know why you have brought me here. वो कह रहे आगे कि मैं नहीं जानता मुझे यहाँ क्यों लेके आए। Of course, in his heart, he knew why. A order of his Guru Maharaj. तो हालांकि वो जानते थे कि वो क्यों आए हैं, क्योंकि उनके गुरु महाराज का आदेश था। And to make an attempt to spread Krishna consciousness. और वह अपना इस मौके को उठाना चाहते थे इस कृष्ण भावना को प्रचार करने के लिए। Although he was manifest as Trikalagya, तो वो भले ही त्रिकालज्ञ थे, knowing past, present, and future. भूत भविष्य He could see the future. He could see the future. वो भविष्य को देख सकते थे। Just like when he was in Golden Gate Park with Malati. I love telling this. तो एक गोल्ड गेट पार्क है, वहाँ पे जब वो मालती माता जी के साथ There was maybe 4 or 5 at most devotees walking with Srila Prabhupada next to a lake in Golden Gate Park in San Francisco. सैन फ्रांसिस्को में Very beautiful. 4-5 भक्त श्रील प्रभुपाद जी के साथ चल रहे थे उस एक लेक के उस गोल्ड गेट पार्क के उसमें एक लेक He turned to Malati and said, "This Krishna consciousness movement will spread all over the world." और उन्होंने मालती देवी की तरफ मुड़ के कहा, यह कृष्ण भावनामय संघ पूरे विश्व भर में फैलेगा। 5 devotees recently hippies. जबकि Well, a short time ago. 5 हिप्पी भक्त मौजूद Hippies short time ago. जो थोड़े ही पहले जुड़े थे। She tells this story. She told this story in Prabhupada Remembrance in Vrindavan. वह जो है प्रभुपाद रिमेम्बरेंस पे या वृंदावन में ये 5 totally raw new devotees. उस समय एकदम 5 नए नौसिखिया भक्त थे। So she's thinking, movement? वो सोच रही थी कोई आंदोलन। What is it? She didn't ask. She was just bewildered. उन्होंने कुछ पूछा नहीं, वो सिर्फ This Krishna consciousness movement will spread all over the world. What movement? कृष्ण भावना आंदोलन पूरे विश्व में फैलेगा, कौन सा आंदोलन? But Prabhupada could see all these things. He could see. प्रभुपाद जी ये सब देख पाते थे। So he can say, I do not know why you have brought me here. इसीलिए वो कुछ कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि आप मुझे क्यों लेके आए हैं। But at the same time he knew, Trikalagya. उसी साथ में वो ये भी जानते थे कि वो क्यों आए हैं, वो त्रिकालज्ञ। Of course, many times he became discouraged because of stuff. Just like we go out, you guys go out, book distribution, and sometimes you don't find, even university preaching, sometimes you don't find enough young men who are deeply interested in what you have to say. हालांकि श्री प्रभुपाद जी बहुत बार निराश भी हुए थे, और जैसे कि हम भी यहाँ पुस्तक वितरण के लिए जाते हैं या फिर हम अगर प्रचार के लिए जाते हैं और कोई But we can't imagine how discouraging it was in New York. और हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कितना निराशपूर्वक था उस समय। A horrible city. न्यूयॉर्क में जो कि इतनी भयावह शहर है। And nobody interested in what he had to say. Nobody listening. कोई भी किसी को भी रुचि नहीं थी श्रील प्रभुपाद जी जो कहना चाहते थे। So it's reported in Leelamritas. Several times he went down to the dock तो ये लीलामृत में वर्णित किया गया है कि वो काफी बार जो है उस पोर्ट पे वापस गए and asked the ticket taker, तो उस टिकट वालों को हमेशा पूछते थे, when is the next boat back to India? अगला जो है जहाज कब जा रहा है भारत के लिए। Nothing positive was happening, you know. कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा था। Only negative obstacles one after another. Living in a slum, terrible. एक के बाद एक वहाँ विपदाएं आए जा रही थी, स्लम में रहना। No other Vaishnava would tolerate such horrible conditions. कोई भी अन्य वैष्णव इस चीज को सहन नहीं कर पाया। So therefore he says, but this is before all of that rotten environment he was forced to live in for a while. तो ये उससे पहले की बात है जब वो ऐसे स्थान पे रुकने गए थे जहाँ। So I don't know why you brought me here, he says to Krishna. कह रहे हैं कि मैं नहीं जानता कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं।
You're so kind upon this useless soul. आप इतने कृपालु हैं इस पतित जीवात्मा पे। But you know, the way the history goes, he was sitting under that famous tree at Thompson Square Park in New York, in the park. It's a big tree. It's very interesting. The tree was dying until Srila Prabhupada sat under it. Haribol! Come on, that was lame. Haribol! Now that tree is doing fine by the mercy of Prabhupada. By association with Mahabhagavat, Nityasara, just see, a dying tree came back to life. वो जो पेड़ एकदम मृत अवस्था में था वो दोबारा जीवित अवस्था में आ गया, अभी भी जीवित है वो। क्यों? क्योंकि वो नित्य सिद्ध श्रील प्रभुपाद जी जो उनके संग मिला। Never underestimate the power of Shuddhanam or Premanam beyond Shuddhanam. Premanam. जो है शुद्ध नाम का है, प्रेम नाम का, कभी भी So still, he wasn't finding submissive souls. तो वो जो है ढूंढ नहीं पा रहे थे ऐसे शरणागत शिष्यों को। So he sat under that tree with his eyes closed. तो वो इसीलिए पेड़ के नीचे बैठे अपनी आंखें बंद कर just began chanting. और उन्होंने जप करना शुरू कर दिया, कीर्तन करना। And he was praying to Krishna, my dear Lord, और वह प्रार्थना कर रहे हैं, हे मेरे प्रिय कृष्ण, please send me some encouragement. आप मुझे कुछ उत्साह प्रदान कीजिए। This is a hellish situation. ये बहुत नारकीय स्थान है। Nobody interested. कोई भी यहाँ रुचि नहीं ले रहा। So he sat there with his eyes closed in samadhi. वह समाधि की स्थिति में आंखें बंद करके बैठ गए। It may have been a couple of hours. और कुछ घंटों तक वो ऐसे ही बैठे रहे। Then after some time he opened his eyes. और कुछ समय बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली। Because he was samadhi, he didn't notice what was going on. क्योंकि वो समाधि में थे इसलिए वो देख नहीं पा रहे थे आसपास क्या चल रहा है। He was surrounded by people who were chanting the holy name. और वो घिरे हुए थे लोगों से जो कि कीर्तन कर रहे थे। Sri Bhagavad Krishna heard his prayer. कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनी। So he sent some people who were happily chanting the holy name. In America, in the land of meat eaters, there probably was not even one vegetarian amongst them. तो ऐसे इसीलिए श्री कृष्ण ने उनकी प्रार्थना सुनी और ऐसे अनुयायियों को भेजा जो इस महामंत्र में You look at the photographs, they were older people. The vegetarians were the younger generation. But mostly older people that were surrounding him when he came out of samadhi. So then he was very astonished. Oh, this is very wonderful. And of course, he was feeling very grateful to Krishna for sending him such a vivid sign of encouragement. So, my dear Lord Krishna, you are so kind upon this useless soul, but I do not know why you have brought me here. That's external, because he knew on a different level, in his heart he knew. Now you can do whatever you like with me. See, that's devotee. So each one of these short phrases by Srila Prabhupada, download it. The essence of Krishna consciousness. Now you can do whatever you like with me. That's Vaishnav. That's confirmed in the Sikshastika. Even if you handle me roughly by your embrace, you're still my worshipful Lord unconditionally. That is Vaishnav. Nothing less. You're all young guys here. Maybe Nityananda Ashra is a little older. But all of you will face thousands and thousands of obstacles in your attempts to become Krishna conscious. That's both bad news and good news. It's bad news because you have to be able to pass Krishna's tests.
एक दुख की खबर है इसलिए क्योंकि आपको कृष्ण के इस परीक्षा को पार करना होगा। You might say, that's not fair, I'm a neophyte. तो आप कह सकते हैं कि नहीं ये मेरा अच्छा नहीं है, मैं तो एक नौसिखिया भक्त हूँ। I don't have any kind of strength like Srila Prabhupada for passing tests. मेरे में इतनी शक्ति नहीं है इन परीक्षाओं को पार करने के लिए जिस प्रकार श्रील प्रभुपाद। But sorry, that's not how Krishna plays the game. पर यही है, इसी प्रकार जो है कृष्ण अपना खेल खेलते हैं। He plays the game according to his own rules. कृष्ण खेल खेलते हैं अपनी इच्छा के अनुसार, अपने नियमों के It's called tough love. तो ये जो है इसको कहते हैं टफ लव। Why doesn't Krishna just hand me himself on a gold plate and so I can enjoy him? Why? Well, that's the defect right there. कृष्ण जो है अपने आप को क्यों नहीं दे देते एक सुंदर सी सोने की थाली में रखी है? Well, क्यों इतनी बड़ी? Shri Shri Radha Madhavu Gopal, they will allow us to enjoy them, but at the same time, it's not supposed to be for our sense gratification. It's for their sense gratification. अपने सानिध्य में हमें आनंद की अनुभूति करने देंगे, लेकिन ये हमारे आनंद की अनुभूति के लिए नहीं है। So you will face thousands and thousands of tests, presuming that you make it in Krishna consciousness. तो अगर आप कृष्ण भावना बनेंगे तो आपको हजारों हजारों परीक्षाएं पार करनी होगी। Prabhupada told us, don't be surprised by who leaves. प्रभुपाद जी ने कहा कि आप इससे चौंकी मत कि कौन जाता है। Be surprised by who stays. और इससे आप चौंकिए कि कौन रुकता है। The reason for the test is that Krishna is ready to award his own lotus feet, which are impossible to attain. और परीक्षा देने का कारण यह है कि श्री कृष्ण अपने स्वयं Yogis, चरण कमल वो प्रदान करने वाले हैं। yogis, जो कि बिल्कुल भी असंभव है योगियों yogis, jnanis, ज्ञानियों के लिए प्राप्त it's है। clearly stated in Brahma Samhita. यह ब्रह्म संहिता में स्पष्ट रूप से वर्णन है। They cannot approach even the tip of the toenail of the Supreme Personality of Godhead. के नाखून के एक चमक के Shubhanga Krishna in Goloka, not even the tip of the toenail. उनके जो नाखून है उसके अग्र हिस्से तक भी वो नहीं पहुंच सकते। ये ब्रह्म संहिता में बता रहा है। But out of intimate love and compassion, लेकिन बहुत ही प्रेम पूर्वक और कृपा के कारण in the mood of Nityananda Prabhu and Gauranga. नित्यानंद प्रभु और गौरांग प्रभु के भाव में। And who is Gauranga Mahaprabhu? श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? Sri Krishna Chaitanya, Radha Krishna Nahi Anya. Sri Krishna Chaitanya, Sri Krishna Chaitanya. Well, here's a little bit of Krishna and Mahaprabhu, तो कृष्ण भी थोड़े अंश में मौजूद हैं महाप्रभु। but how much? लेकिन कितने? Krishna has assumed Gaurangi, कृष्ण जो है उन्होंने गौरांगी को उनका भाव ले लिया, the golden color of Radharani, उनका सुनहरा रंग भी ले लिया है and the mood of Radharani. और उनका जो भाव है वो भी ले लिया है। What's left? तो बचा ही क्या? Not much. तो ज्यादा नहीं बचा। And the famous mercy of Mahaprabhu, where's it coming from? और ये जो इतनी प्रसिद्ध महाप्रभु की कृपा है वो कहाँ से आ रही है? It's Radhika. वो श्रीमती राधा रानी से आ रही है। We need to know that. So daily you're associating with Radhika, Radha Krishna here, right here. आप रोज यहाँ पे प्रसंग कर रहे हैं श्री राधा कृष्ण का यहीं पे। Try to understand. इस चीज को समझने का प्रयास कीजिए। You don't need big bucks in the bank. आपको बहुत धन की आवश्यकता नहीं है अपने बैंक में। Your wealth is standing right in front of you here. आपका जो असली धन है वो यहाँ आपके सामने खड़े हैं। If you think that you're poor, you'll never be happy. अगर आप यह सोचें कि आप गरीब हैं तो फिर आप Mercy of Srila Prabhupada and his divine representatives. You've got it all. प्रभुपाद जी की कृपा है, उनके जो प्रतिनिधि यहाँ पे So my might question, how can I have it all? You know, I'm a penniless brahmachari. सब कुछ यहाँ पर दे रखा है हमें, तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं सब कुछ कैसे हमारे पास है, हमने तो एक गरीब ब्रह्मचारी। Vasudeva Sarvamiti. वासुदेवम सर्वमिति। Vasudev, Krishna, Govinda, Tribhanga, Krishna, he is everything. So you have it all. You have Krishna, but we don't know is the problem. We don't know that we have कृष्ण Krishna. हर जगह मौजूद है, लेकिन हम नहीं जानते कि वो Half a hand philosophy. तो ये जो है अर्ध। What's that? That's what Krishna Kavars Goswami called it. Half a hand. तो इसी प्रकार वो कहते हैं। Because his brother was attached to Mahaprabhu, but not to Nityananda Prabhu. तो उनके भाई जो है वो नित्यानंद प्रभु से तो आकर्षित थे। So Krishna Kaviraj Goswami called it half a hand philosophy. तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने कहा कि ये जो है अर्ध मुकुट में है। So
we have to understand the availability of Shri Shri Radha and Krishna right in front of us. Our wealth is right here, standing in front of us. तो हमें ये समझना है श्री राधा मदन गोपाल जी यहाँ खड़े हैं, यही हमारे असली धन है, ये हमारे सामने यहाँ मौजूद है. Doesn't matter if you're a penniless brahmachari. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, भले ही आप गरीब एक ब्रह्मचारी हैं. Better wealth in being able to see Radha and Krishna every day. इससे बड़ा धन क्या है कि आप राधा कृष्ण को यहाँ रोज देख पा रहे हैं. Who in this creation can see Radha and Krishna every day? कौन है इस पूरे ब्रह्मांड में जो राधा कृष्ण को रोज देख सकता है? Sudurlabha. सुदुर्लभ. Same in Hindi? Very, very rare. बहुत बहुत दुर्लभ. Almost impossible to attain. और यह लगभग नामुमकिन है इस अवस्था. So Krishna's ready. तो कृष्ण तैयार है. Prabhupada says Krishna's ready. प्रभुपाद जी कहते हैं कृष्ण तैयार है. Ready for what? लेकिन किसके लिए तैयार है? To award his own lotus feet that are impossible to attain. अपने स्वयं के चरण प्रदान करना जो कि असंभव है प्राप्त करना. But they're attainable, his lotus toes that can't be approached by yogis and jnanis. और वह अपने नाखून मतलब जो अपने चरण कमल है वो प्रदान करने तैयार है, जो कि नहीं प्राप्त किए जा सकते योगी और ज्ञानियों. They are readily available and visible वह यहाँ पे मौजूद है और दिख भी रहे हैं. by the mercy of Srila Prabhupada and his divine और representatives. श्रील प्रभुपाद जी और उनके प्रतिनिधियों की कृपा के द्वारा. That's our good fortune. ये हमारा सौभाग्य है. Haribol. So, my dear Lord Krishna, तो हे मेरे प्रिय कृष्ण, you are so kind upon this useless soul, आप इतने कृपालु हैं इस पतित जीवात्मा पे. but I did not know why you have brought me here. मुझे ये नहीं पता मुझे यहाँ क्यों लेके आए हैं. New York City. If you saw New York City, it's really bad. न्यूयॉर्क शहर अगर आपने उसको देखा हो तो बहुत ही खराब स्थिति है वहाँ पे. I do not know why you have brought me here. That's external. Of course he knew in his heart. But there's different levels, you know. आगे लिखते हैं प्रभुपाद जी, मैं नहीं जानता मुझे यहाँ क्यों लेके आए, लेकिन ये बाहरी रूप से प्रभुपाद जी बताते हैं. He's saying this under Yoga Maya. I don't know why you brought me here. तो योग माया के प्रभाव में ऐसा कह रहे हैं कि आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए. Now you can do whatever you like with me. अब आप मेरे साथ जो भी करना चाहें कर सकते हैं. But watch here, Prabhupada's really revealing his personal relationship with Krishna. अब आगे आप देखिए किस प्रकार जो है अपना स्वयं का संबंध श्री कृष्ण से प्रभुपाद जी आगे बता रहे हैं. But I guess you have some business here. लेकिन मुझे लगता है कि आपका यहाँ कुछ कार्य है मेरे द्वारा करने के लिए. Years later, Prabhupada installed Sri Sri Radha Govinda in New York City. कुछ सालों बाद श्री प्रभुपाद ने श्री राधा कृष्ण न्यूयॉर्क शहर में स्थापित किए. So he has some business there, present tense. Radha Govinda, very beautiful, very wonderful deities, and they're still presiding over New York City. It's their city. और श्री श्री राधा गोविंद अभी भी वहाँ मौजूद है और उनका जो है अभी भी श्री प्रभुपाद जी से जो मार्ग वो चल रहा है. One day in the future, it'll have beautiful parks and open spaces. और भविष्य में ऐसा भी होगा कि वहाँ पे बहुत सुंदर For their pleasure. मैदान होंगे उनके आनंद के लिए. That's after the current city falls apart and they rebuild it with beautiful parks like Dwarka. और अभी ये तब होगा जब ये अभी जो मौजूद वहाँ पे शहर है वो जब गिर जाएगा और तो Lakes, स्थापना करेंगे द्वारका lakes शहर and canals, the way a city's supposed to be. और वहाँ पे सुंदर नदियाँ होंगी. So he says, I guess you have some business here. और वो आगे कह रहे हैं कि मुझे लगता है आपका यहाँ पे कुछ कार्य है मेरे द्वारा. Otherwise, why would you bring me to this terrible place? अब नहीं तो फिर आप मुझे यहाँ क्यों भेजते ऐसे घोर स्थान पे. You wouldn't like it in New York City. आप लोगों को अच्छा नहीं लगेगा न्यूयॉर्क शहर. It's not the golden American dream that especially Indians and third world people think it's the golden, they think it's a heavenly planet. That is incredible illusion. ये कोई सुनहरा अमेरिकन जो लोग ऐसे स्वप्न रखते हैं वैसा नहीं है जैसा ज़्यादातर भारतीय रखते To हैं. get a visa into the United States, right on the top of the visa application, वीज़ा प्राप्त करने के लिए अमेरिका के लिए it says, we presume that you want to stay. तो जो वीज़ा में उसमें वो पहले ही सबसे ऊपर में ये बताते हैं कि हम ऐसा मानते हैं कि आप Because all these third world country people think that the United States is a heavenly planet. Not heavenly planet. But they're thinking that's called moha. तो वो सोचते हैं कि हम जो है अपने स्वर्ग जैसे स्थान पे रह रहे हैं. तो Illusion. ये एकदम मोह है.
So he says, I guess you have some business here. तो इसीलिए आगे कहना प्रभुपाद जी मुझे लगता है आपका कुछ यहाँ पे कार्य है To appear as Shri Radha Govinda and preside over wonderful kirtans, take nice prasad cooked by wonderful devotees. तो राधा गोविंद जी के वहाँ रुकना और फिर वहाँ पे भक्तों के संग में रह के बहुत अच्छा प्रसाद Attract देना hundreds of people to Krishna consciousness. और बहुत से लोगों को वहाँ आकर्षित करना And later to appear as Jagannath in Rath Yatra. और बाद में फिर जगन्नाथ रथ यात्रा के रूप में प्रकट होना But he says, I guess you have some business here. तो श्री प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं लेकिन मैं सोचता हूँ कि Otherwise, why would you bring me to this terrible place? आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आते Cement. Everywhere. Cement, steel, Kali Yuga. वहाँ पे तो हर चीज जो है सीमेंट और इसी से बनी इमारतें बनी The age of steel, Kali Yuga, is the age of Iron Age. ये जो है आयरन एज कहा जाता है All the buildings, even this building here, is built with steel bars inside the cement. तो ये जो जितनी भी इमारतें हैं जैसे ये मंदिर का भी जो निर्माण है इसमें इसमें अंदर जो है लोहे भरा हुआ है Formerly, the temples in India were made of solid stone. There's no question of steel. पहले जो है जो भारत में जो ऐसे मंदिर बनते थे वो पत्थर से बनते थे But Deshakala Patra, we have to go to this. लेकिन हमें जो है देश काल पर पात्र के हिसाब से चलना होगा So it says, but I guess you have some business here. इसीलिए और कह रहे हैं कि मुझे लगता है आपका कुछ कार्य है यहाँ पे Otherwise, why would you bring me to this terrible place? वरना आप मुझे यहाँ पे क्यों लेके आते Prabhupada certainly did not see it as a heavenly planet. Certainly प्रभुपाद जी not. ने उस स्थान को एक स्वर्गीय जगह जैसा लोक में ऐसा नहीं समझा He continues, most of the population here is covered by the material modes of ignorance and passion. वो आगे बताते हैं कि यहाँ पे जो ज़्यादातर लोग हैं वह ढके हुए हैं तमोगुण और Absorbed in material life, और भौतिक जीवन में एकदम they think themselves very happy and वो satisfied. सोचते हैं कि हम बहुत ही सुखी और संतुष्ट हैं Therefore, they have no taste for the transcendental message of Vasudeva Krishna. इसीलिए उनकी कोई रुचि नहीं है जो वासुदेव जी का दिव्य उपदेश है उसके प्रति I do not know how I'm able to understand it. मैं नहीं जानता कि वो लोग इस चीज़ को कैसे समझ पाएंगे Well, they were able to understand by the mercy of Srila Prabhupada. That's it. लेकिन वो श्रील प्रभुपाद जी की कृपा के हम देखते हैं बाद में वो समझ पाएंगे Nitya Siddha devotee empowered by Guru Pampara and Mahaprabhu Nityananda नित्य Prabhu. श्रील प्रभुपाद नित्य सिद्ध भक्त हैं जो कि पूरे उनको एम्पावरमेंट मिली है पूरे गुरु Naseva, Naseva, Naseva. There's no other way. नास्ते उसके अलावा कोई और Except by the mercy of a Mahabhagat Nitya Siddha devotee, केवल एक महाभाग नित्य सिद्ध and later by the representative of such a great devotee, केवल उन्हीं की कृपा से और फिर उनके प्रतिनिधियों की कृपा से then even fools can understand something about Krishna और उनकी कृपा से मूर्ख भी जो है समझ सकता है कि कृष्ण क्या है and develop attraction for the holy name. और आकर्षण I think I described before, where I've seen a video तो मैं पहले ही बता रखा हूँ कि मैंने एक वीडियो देखा है of devotees out in the streets of New York City, but they went to the posh area, posh? They went to Wall Street, some area like that, posh, तो the मैं fancy वीडियो affluent देखा area, तो बाहर निकले थे संकीर्तन के लिए और बाहर बहुत ही अमीर स्थान पे with a गए थे microphone with a long cord, और एक बहुत ही लंबा उनके पास माइक था बहुत लंबा तार था and while the cameras were rolling, they used to roll, they don't roll anymore. और उस समय जो है कैमरा उनके साथ में था जो कि घूमता रहता था And these devotees, merciful devotees, on behalf of Srila Prabhupada Nityananda Prabhu and Mahaprabhu, और यह कृपालु भक्त जो प्रतिनिधि थे श्रील प्रभुपाद they were जी just के महाप्रभु के tagging people on the sidewalk तो वो लोग मुझे जो आसपास लोग चल रहे थे उनको रोक रहे थे in New York City, और न्यूयॉर्क शहर में telling them for the first time about the Mahamantra and causing them to chant और वहाँ for the के very आसपास first लोगों time. को बता रहे थे कि हरे कृष्ण महामंत्र के बारे में और यह सब पहली बार But उनके साथ हो रहा था Srikala, yeah, Prabhupada could see that was going to happen, of course. और प्रभुपाद जी निकाल लगे थे इसलिए वो जानते थे कि ये सब होने वाला है And these people, it's amazing. One day, Nityananda Ashraya, you have to get that film and show it to the devotees. I don't know, it's available somewhere. तो BBT कहना must have it. उनसे निवेदन है कि आप जो है सभी भक्तों को It's दिखाइए an ecstatic because there probably wasn't a single vegetarian amongst them. तो ये बहुत ही दिव्य है कि वहाँ पे उस समय कोई भी मांसाहार के बिना कोई व्यक्ति मौजूद नहीं था सभी मांसाहार करते थे Their very first contact with Krishna, and they're in ecstasy.
और उनका जो पहला संबंध है कृष्ण के साथ, आपको इतनी You have to watch the video to see. They're dancing and laughing. Just see. आपको वो जो है वीडियो देखना चाहिए, वो गा रहे हैं, नाच Their रहे हैं। very first contact with Radha and Krishna, because Hari is Radharani, of course. तो ये उनका पहला संपर्क है श्री कृष्ण के साथ, क्योंकि जो हरे As good as contact with the deities, and they were probably non-veg. और ये उसी प्रकार है जिस प्रकार हम संपर्क कर रहे हैं विद्रोह के साथ, And complete ecstasy by the mercy of the devotees and the mercy of Srila Prabhupada. और वो पूरी, क्योंकि उन पे कृपा थी श्री प्रभुपाद जी की। Haribol. Then he says, but I know that your causeless mercy can make everything possible. लेकिन मैं जानता हूँ कि आपकी हेतु की कृपा सब कुछ संभव कर सकती है। Such as meat eaters relishing the holy name. The relishing, I mean, they're in complete ecstasy, dancing and smiling in ecstasy. उसका उदाहरण है किस प्रकार जो मांसाहार You gotta- वाले लोग हैं वो हरिनाम को You got to get that video. पालन कर रहे हैं। You got to get that video. तो आपको उस वीडियो को देखना है, निकालना है। Why? The next statement, because you are the most expert mystic. क्यों? क्योंकि आप जो है एक बहुत ही बड़े जादूगर हैं, Yogeshwar. योगेश्वर। There's so many yogis, but who could compare with the supreme yogi? इतने सारे योगी हैं, लेकिन भगवान कृष्ण से कौन? Krishna's the original yogi. कृष्ण जो है वो आदि So he's योगी। called Yogeshwar. तो इसीलिए जो है उन्हें योगेश्वर कहा जाता है। So he puts on this fantastic magic show तो वो जो है इतना सुंदर अपना मैजिक शो called the the Mahamaya, जिसको कहा जाता है महामाया, Mahatattva. महत्तत्व। It's a show. ये उनका एक शो It's a fabulous magic show created by the Supreme Personality of Godhead, ये एक सुंदर जादूगर जो है नाटक Combined with कृष्ण ने the- बनाया है। combined with the desires of the confused jivas. और The यह सम्मिलित है जो जीवों की इच्छा together, से। teamwork. The jivas desire in the wrong way, तो ये जो है टीम वर्क है जो जीवों के और जिनकी गलत इच्छाएं हैं, and the merciful Lord supplies the stage set. और जो कृपालु भगवान है वह जो स्टेज प्रदान करते हैं जिसको It's वैसा। interesting that the famous Shakespeare, the UK author of so many famous dramas, ये बहुत रोचक है कि जैसे शेक्सपियर है, उन्होंने बहुत सुंदर सुंदर नाटक भी लिखे he हैं। had a little light bulb of realization. उनका एक छोटा सा एक ऐसा अनुभूति भी था। He said, "This world is but a stage, उन्होंने कहा कि यह जो संसार है यह एक and we are but the players on it." और हम जो है उस पे नाचने वाले That's a s- प्लेयर्स के बराबर। small ray of light coming from the absolute truth, you see? तो ये जो है हम देख सकते हैं कि बहुत ही छोटे रूप में Somehow or other, आ रहा है उनको। he understood. Chaitya Guru तो हम clued देख him सकते in. हैं कि ये जो That's the चैत्य- actual situation. ये चैत्य गुरु है जो उन्हें बता रहे हैं ये, इसलिए But Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, लेकिन भक्ति सारस्वती ठाकुर he described it more directly उन्होंने बहुत ही स्पष्ट रूप से इसका वर्णन किया about the Mahatattva and all activities going inside. महत तत्व और जितने भी अंतर्गत उसके कार्य हो रहे हैं। He says, उन्होंने कहा but the whole show is only temporary. ये पूरा जो शो है यह एकदम क्षणिक है। It's a magic show. Nobody can put on magic show like this. यह जादू का जो है शो है, तो ऐसा कोई जादू का शो कोई नहीं रख सकता Except for Tribhanga Krishna. सिर्फ त्रिभंग कृष्ण ऐसा He can do with only a portion. Of course, for that he takes help from Radharani. और वह अपने अंश से भी ऐसा कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए वो It's a श्रीमती tiny राधा- fraction of her energy expands as a Mahatattva. और ये उन्हीं की जो है अंश शक्ति का एक अंश है जो कि महत्त्व के रूप में विस्तार करता है। So all the jivas are under her protection, but they don't know it. सारे जीव जो है उन्हीं के शरण में है, लेकिन सारे जीव ऐसे Even the demons are under her protection असुर भी उन्हीं की शरण में है, because they've entered into the womb of the material energy. क्योंकि वो जो है गर्भ में प्रदान किए हैं जो भौतिक संसार है उसके। In India, they're worshipping her as Kali, Durga, ghastliness. उनको अलग अलग रूपों से पूजा जाता है, कली दुर्गा उनके रूप। They don't know that in a form of Kali, she kills her own devotees. They don't know that. वो ये सब नहीं जानते कि कली के रूप में वो अपने ही भक्तों को मारती है। You don't know? आप नहीं जानते? How many of you read the story of Jad Bharat? आप कितने भक्तों ने जड़ भारत की कथा पढ़ी है?
That's not bad. ये बुरा नहीं है, Because Jad Bharat looked like a homeless, he was living like a homeless person. We call them dreadlocks, matted hair, filthy, dirty, no bathing, nothing. And so they thought the Gundas surrounding Kali, they thought, this guy is a man animal. जड़ भरत जो थे वो एकदम बिना घर के जैसे लोग होते हैं, Well, उनकी जटाएं थी, he'll make a good sacrifice for our Kali. तो उनकी बहुत बड़ी बड़ी जटाएं थी और जो दूसरे जो लोग थे वो सोचते थे कि पशु तुल्य मनुष्य, Well, right now he's too dirty. तो ये जो है एकदम सही, So जिसको हम कली को चढ़ा सकते हैं, they bathed him and gave him scented oils and ये jewelry. बहुत ही गंदी अवस्था में है, तो इसीलिए हम उनको उसको नहलाया, उनको बहुत Make him really nice for being sacrificed to Kali. सुगंधित पानी भी छिड़का उनके ऊपर और फिर जो है उनको अच्छे से तैयार किया, Paka sacrifice, you see. They wanted him to be a first class sacrifice. ताकि कली को जो है बलिदान चढ़ा सके वहाँ, So they had their weapons ready in front of Kali. तो उनके जो है औजार तैयार थे, The murti of Kali. और उस समय कली की मूर्ति वहाँ स्थित थी, Their swords and knives and all that ready to cut off his head उनकी and जो है तलवारें और सब कुछ तैयार था ताकि उनके गर्दन काट sacrifice Jad Bharat to their goddess. और जड़ भरत को बलि चढ़ाने के लिए कली माता को। But Kali is not stupid. She's a devotee of Krishna. Try to understand. लेकिन जो काली है वो बेवकूफ नहीं है, वह भक्त है श्री कृष्ण की। Emphasis on Lord Vishnu, of course. Emphasis not on Shrivanga Govinda. तो वो जो है विष्णु की इस पे जो है हम जोर दे रहे हैं, कृष्ण Well, पे she नहीं। knows who Krishna is. बट वो जानती है कि लेकिन कृष्ण कौन है। She herself is a devotee of Lord Vishnu. Please understand वो that point. स्वयं भगवान विष्णु की भक्त है। What Kali worshippers will never understand, but at least you have to understand. लेकिन काली के जो पूजा करने वाले हैं वो ये नहीं समझ सकते, लेकिन आप लोग She's a sold-out devotee of Lord Vishnu. वह एक दिव्य भक्त है भगवान विष्णु की। So when the dacoits seized Jad Bharat and were just about to cut off his head and offer the blood to Kali, तो वहाँ पे जो लोग थे वो जब जड़ भरत को मारने वाले थे और बलि चढ़ाने वाले थे उनकी, boom! उसी समय जोर से आवाज आई She broke in half. The deity broke in half. और जो विग्रह था वो टूट गया And Kali herself leapt out of the broken deity. और जो काली माता काली थी वो खुद उससे बाहर निकल के आई She then killed all her dacoit followers. और फिर उन्होंने जितने भी उनके जो अनुयायी थे उन सबको मार दिया। They are the ones that were drinking the blood, not Kali. तो वो लोग थे जो असलियत में खून पीने वाले थे, माता काली। She butchered all these dacoits to save Lord Vishnu's pure devotee. उन्होंने उन सारे अनुयायियों को मारा क्योंकि वो बचाना चाहती थी भगवान विष्णु के भक्त को। That's relationship, devotee and Lord Vishnu. तो यह है संबंध। So, Prabhupada says, because you're the most expert mystic, प्रभुपाद आगे कह रहे हैं कि आप ही सबसे दक्ष। he's understanding. How will they understand the mellows of devotional service? I mean, they're all covered by tamagun, heavy. तो वो सब जो है तमोगुण से इतने आच्छादित हैं, तो कैसे जो है भगवान कृष्ण का वो संदेश समझ पाएंगे। He was living in the Bowery. Bowery means the area there were drunkards. To get up to his apartment, he had to step over the drunkard. तो वो जो है बावरी स्थान पे रह रहे थे, तो वो ऐसा स्थान था जहाँ पे सब Why you say Hare Krishna? He would say Hare Krishna. हरे कृष्ण कहते थे प्रभुपाद। So, how will they understand the mellows of devotional service? तो वो कैसे समझ पाएंगे जो भक्ति है उसके गुण रहस्य को। O Lord, I am simply praying for your mercy ओ हे भगवान, मैं केवल आपकी कृपा के लिए ही याचना कर रहा हूँ so that I will be able to convince them ताकि मैं उनको समझा सकूँ, about your message. उनको विश्वास दिला सकूँ आपके संदेश के बारे में। So did he convince them? तो क्या वो उनको विश्वास दिला पाए? He started out with only a small handful of disciples. उन्होंने शुरू किया था बहुत ही कुछ ही संख्या में जो भक्त थे उनके अनुयायी थे। Brahmananda, Gargaboni, गर्गमुनि, Jadharani. जदुरानी, At that time, Jadharani was married to Satsarup Maharaj. और जदुरानी माता जी उस समय सत्स्वरूप महाराज के Very small in the beginning, very small numbers और of. कुछ ही जो है भक्त थे उसमें, कुछ बहुत कम संख्या में। In fact,
he tricked the devotees. और इसी श्रील प्रभुपाद जी ने असलियत में जो है भक्तों को He initiated them without even telling them what rules and regulations they had to follow. उन्होंने तो शुरू में बताया भी नहीं कि आपको किस प्रकार के नियम पालन करने होंगे. He posted a notice on the wall in his own handwriting. और उन्होंने जो है नोटिस चिपकाया था दीवार के ऊपर अपनी खुद की लिखी थी. All initiated devotees, they must follow these rules and regulations. जितने भी दीक्षित भक्त हैं उन सबको इन नियमों को पालन करना होगा. A little shocking because he tricked them. He didn't tell them in advance. तो वो एकदम शॉक गए क्योंकि प्रभुपाद जी ने उनको ये पहले नहीं बताया. So, but they'd already developed love and attachment for him, so therefore they at least tried to surrender. लेकिन उनको पहले से ही श्री प्रभुपाद जी के प्रति थोड़ा शरणागत और उनके प्रति प्रेम विकसित कर चुके थे. You've seen those old black and white films of the devotees in New York. देखी हैं जो पहले जो ब्लैक एंड व्हाइट जो मूवीज आती थी. There's one really, you know the word hilarious? तो ये बहुत Extremely funny ये बहुत ही scene. हास्यप्रद है. Gargamuni still has long hair. गर्भमुनि के अभी भी बहुत लंबे बाल हैं. He's trying to explain the philosophy to somebody. तो उसमें वीडियो में वो कि अपनी जो फिलॉसफी है वो समझाने का प्रयास कर रहे हैं. I can't remember what he's saying, but he's talking all nonsense. मैं याद तो नहीं कर पा रहा क्या कह रहे थे वो, लेकिन वो एकदम At some point he stops talking and looks like, I wonder if I'm off. तो किसी जो है पॉइंट को रुक जाते थे और सोचने लग जाते थे. So that's how Prabhupada started this movement. इसी प्रकार जो है ऐसे अनुयायी के साथ श्रील प्रभुपाद Because you are the most expert mystic, therefore as Chaitya Guru he could work within the heart of the devotees. तो उन्होंने कहा कि आप सबसे जो है बड़े योगी हैं, तो इसीलिए आप जो है ऐसा जादू कर सकते हैं. Oh Lord, I am simply praying for your mercy हे भगवान, मैं केवल आपकी कृपा के लिए याचना कर so रहा that I'll be able to convince them about your message. हूँ ताकि मैं उनको विश्वास दिला सकूं आपके संदेश के बारे में. All living entities have come under the control of the illusory energy by your will. जितनी भी जीवात्माएं हैं वह माया के अंतर्गत हुई है आपकी इच्छा के कारण. Therefore, if you like, by your will, they can also be released. इसीलिए यदि आप चाहें, अगर आपकी इच्छा है तो वो मुक्त भी हो सकते हैं From the clutches of illusion. और इन जो बंधन है You know, clutches means grasp, strangling grasp. जो पकड़ है माया ने तो पकड़ रखा है उससे. But we can understand for that he empowered his sacrifice avatar. तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि जो है इसीलिए श्री प्रभुपाद जी को जो है शक्ति मिली है, शक्ति अभिनवतार में. So by your will they can also be released from the clutches of illusion. तो आपकी इच्छा होगी तो वह मुक्त हो सकते हैं. Then here's the key. He says, I wish that you may deliver them. और यहाँ पे जो है मुख्य चीज है, यहाँ आगे लिख रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि आप उनको मुक्त कर दीजिए. Try to understand that's the key. इसी समझने का प्रयास कीजिए, यही मुख्य बिंदु है. Because Krishna's infallible Saktavesha avatar, Nityasiddha devotee intervened, therefore this movement was able to start. क्योंकि कृष्ण के जो शक्तिवेश अवतार है श्रील प्रभुपाद जी, उन्होंने इसमें हाथ प्रदान किया था, इसीलिए जो है वह. He says, therefore, if you so desire their deliverance, इसीलिए यदि आपकी इच्छा हो तो then only will they be able to understand your message. तभी ये आपके संदेश को समझ सकते हैं. Well, Prabhupada knew the context of the history of India. प्रभुपाद जी जानते थे भारत का इतिहास को. Who was studying Krishna consciousness? जो कौन कृष्ण भावना में पढ़ेगा? Not street people of New York. तो कोई जो शहर जो गली के लोग हैं वो नहीं पढ़ेंगे. Big sadhus with matted hair, you know. बड़े-बड़े जो साधु होते हैं इतने बड़ी-बड़ी जटाएं रखते हैं. Thousands of years of austerity and penance. हजारों साल की तपस्या के बाद. Always absorbed in pure bhakti. हमेशा जो है पूर्णतः ऐसे लगे हुए शुद्ध भक्ति में. Those are the original devotees in India. वो जो है असली भक्त थे भारत में. At Naimisharanya there were some 80,000 sages. लगभग 80,000 ऐसे ऋषिगण मौजूद थे. So if you so desire their deliverance,
प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि अगर आपकी ऐसी इच्छा है, then only will they be able to understand your message. Not so easy, तभी not so वो easy. जो है आपके संदेश को समझ पाएंगे। Because we all have first class guidance क्योंकि हमारे पास बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण है from Jagat Guru Srila Prabhupada जगत गुरु श्री प्रभुपाद जी के द्वारा and his divine representatives. और उनके प्रतिनिधियों के द्वारा, First class guidance and all his books. और बहुत ही अच्छा प्रशिक्षण और उनकी इतनी सारी किताबें भी हैं। This is Shravanam Kirtanam week, और उनके इतने अभी जो है श्रवणम कीर्तन which चल रहा है, the GBC established special glorification of Srila Prabhupada's books. तो ये जो है जीबीसी ने इसका स्थापन किया है क्योंकि वो श्रील प्रभुपाद जी की किताबों को गुणगान करना So then we can understand that we have Guru Sadhu Shastra ताकि हम समझ पाए कि हमारे पास तीनों गुरु साधु और शास्त्र मौजूद हैं for understanding this inconceivable message of Krishna. और यह अचिंत्य इस जो संदेश है उसको समझने के लिए। And we see how many hundreds of thousands of people around the world now very attracted by Krishna, and every day और हम more and देखते more. हैं कि हजारों संख्या में लोग पूरे विश्व भर में आकर्षित हो रहे हैं भगवान कृष्ण से। As we speak, probably another 200 people became devotees. मैं जितने में बता रहा हूँ ये चीज उतने में ही 200 और नए लोग जो है भक्त बैठ रहे हैं। Not an exaggeration. ये बिल्कुल भी बढ़ा चाल नहीं बता रहा हूँ। Devotees are preaching up a storm all over the world. भक्त लोग जो है एकदम तूफान की तरह सभी जगह प्रचार कर रहे हैं पूरे विश्व में। I've given only one example of the streets of New York, but मैंने thousands केवल एक ही उदाहरण दिया है जो न्यूयॉर्क शहर की गलियों का। thousands and thousands of such preaching efforts are going on all over the world. लेकिन हजारों की हजारों संख्या में पूरे विश्व भर में यह प्रचार फैल रहा है। Even in China. चाइना में भी। You know something? Right now, China is very, very controversial, you know. चीन जो है बहुत ही There's talk of World War III तो वो जो वहाँ पे बातें चल रही है surrounding by China. China versus the rest of the world. They're talking about it. तो चाइना जो है वो प्रमुख है और वो है इसकी बात कर रहे हैं। They're actually a nuclear power. और उनके पास जो है ये न्यूक्लियर शक्ति भी है। But, so people say, hey, what can a small handful of Hare Krishnas do? लेकिन ये कह सकता है अरे ये इतने से भक्त हैं ये क्या कर सकते हैं? What's your practical contribution to human society, huh? तो आपका जो है समाज में क्या आप लोगों का? Oh, a few hundred devotees can save billions of population of China, that's all. केवल जो 100 कुछ संख्या में जो भक्त है वो पूरे बिलियन की संख्या में जो चाइना में लोग हैं उन सबको बचा सकते हैं। They're making so many enemies. वो इतने सारे दुश्मन बना रहे हैं। All the gun sites are focused on them. They're making a lot of enemies, not good वो politics. बहुत सारे दुश्मन बना रहे हैं और ये अच्छा पॉलिटिक्स नहीं है। If it were not for the devotees, China would be blasted into oblivion, अगर हम भक्त नहीं होते wiped off the map. तो चाइना में अगर भक्त नहीं होते But because there's a few hundred devotees, मैप में भी नहीं दिखते। therefore billions will be saved, you क्योंकि see? वहाँ पे अभी भी कुछ भक्त हैं इसीलिए Because they're under Hladini Shakti, try to understand. वो लोग जो है संरक्षण में है हलादनी शक्ति के इस चीज को समझने पे। So then Prabhupada says, how will I make them understand this message of Krishna प्रभुपाद consciousness? जी कह रहे हैं कैसे मैं इन लोगों को समझा सकता हूँ कृष्ण के बारे में? I am very unfortunate, मैं बहुत ही दुर्भाग्यवश हूँ, unqualified, अयोग्य and the most fallen. और सबसे पतले। Therefore, I am seeking your benediction इसीलिए मैं आपका आशीर्वाद की याचना कर रहा हूँ so that I can convince them, ताकि मैं उनको समझा सकूँ, for I am powerless to do so on my own. क्योंकि मैं एकदम शक्तिहीन हूँ ये करने के लिए। But the point is, he could see himself as a puppet in the hands of Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, वो and अपने आप को एक कठपुतली समझते थे श्री चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद Shrivanga Krishna himself. भगवान कृष्ण के हाथों में। So the next coming up, we see, somehow or other, O Lord, you have brought me here to speak about you. प्रभुपाद जी कह रहे हैं जैसे जैसे देखिए वो भगवान आप मुझे यहाँ लेकर आए हैं कुछ बोलने के लिए।
Now, my Lord, it is up to you to make me a success or failure. तो अब आपके हाथों में है कि आप मुझे सक्सेस दीजिए या फेलियर, As you like. जो आपकी इच्छा है। So what did Krishna decide? तो फिर कृष्ण ने क्या उनके लिए योजना की? To make Prabhupada an unprecedented success. उन्होंने ये योजना की कि श्रील प्रभुपाद जी को एक Haribol! बहुत ही बड़ी विजय प्राप्त हुई। Haribol! Jagaguru Srila Prabhupada ki jai. O Master of all the worlds, ये पूरे विश्व के I can simply repeat your message. विश्व के मालिक मैं केवल आपका संदेश को ही पुनः बता सकता हूँ। So if you like, you could make my power of speaking तो अगर आप चाहें तो आप मेरे बाकी की शक्ति suitable for their understanding. उनके समझ के लिए, So he kept this simple. You're not this body. तो इसीलिए उन्होंने बहुत ही सरल रखा। Krishna's God. आप लोग शरीर नहीं हैं, भगवान कृष्ण ही भगवान हैं। He didn't even speak very much about Radharani, too confidential. उन्होंने जो है श्रीमती राधारानी के बारे में ज़्यादा वर्णन नहीं किया क्योंकि वो But बहुत sometimes गुप्त है। he would joke and say, people will ask, कभी-कभार वो जो है ऐसा मजाक भी करते थे कि लोग कहते हैं who is that girl standing next to Krishna? ओ कि ये कौन है, ये स्त्री जो है श्री कृष्ण के बगल में खड़ी है। So, more indirectly, तो ये जो है to understand anything, अलग रूप से how about the internal Bodhi, it's required to read in Prabhupada's books and hear. तो इसीलिए हमें जो है प्रभुपाद जी की किताबों से हमें ये समझना चाहिए। O spiritual master of all the three worlds, हे पूरे तीनों विश्वों के गुरु, I can simply repeat your message. मैं केवल आपके संदेश को पुनः बता So if you like, you can make my power of speaking suitable अगर आप चाहें तो मेरे वाणी को आप उनके समझ के लिए, for their understanding. ताकि वो उसको समझ सके। Did Krishna do that? क्या कृष्ण ने किया? Certainly. Prabhupada said, I did not write these books. प्रभुपाद जी ने कहा कि ये पुस्तकें मैंने नहीं लिखी है। He gave 100% credit to Krishna. उन्होंने पूरा जो इसका श्रेय है वो भगवान कृष्ण को दिया। That Krishna within the heart was dictating to him कृष्ण what to उनके write. हृदय के अंदर से यह उनको प्रेरणा दे रहे थे कि क्या लिखना है। So for their understanding, suitable. इसीलिए उनके समझ के लिए जो उनके लिए अच्छा है। Only by your causeless mercy will my words become pure. केवल आपके हेतु की कृपा से आप मेरे जो शब्द हैं वह I'm sure that when this transcendental message penetrates their hearts, मैं पूरी तरीके से जानता हूँ कि यदि आपका जो ये संदेश है उनके हृदय में उतरेगा they will certainly feel gladdened. Gladdened, you know, तो means वो जो है पूरी तरह से आनंद से happier. अनुभूति करेंगे। I'll give the instance of the devotees with a film crew out in the streets of New York City. तो मैंने जिस प्रकार आपको उदाहरण दिया कि जो न्यूयॉर्क में भक्त लोग हर गलियों में You got to see this video. It's very wonderful. Exactly what Prabhupada is saying here. वो एकदम वही स्पष्ट रूप से बता रहा है वो वीडियो जो प्रभुपाद जी यहाँ कह रहे हैं। There may not have been one vegetarian with them, but they, on their very first chanting of Mahamantra, तो वहाँ पे भले ही इतने सारे शाकाहारी लोग नहीं मौजूद थे, लेकिन वो जीवन में पहली बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप कर रहे थे। fornicators, meat eaters, whatever, तो ऐसे खाद्य पदार्थ, गलत खाद्य पदार्थ खाने वाले, मांसाहार करने वाले, wine drinkers, शराब ग्रहण करने वाले, what they were relishing is visible. You can see they're in complete ecstasy. Their very first contact with the holy name. वो पूरे आनंद की अनुभूति कर रहे थे। हम देख सकते हैं उस वीडियो में कि वो किस प्रकार पहला संपर्क ये हरिनाम के साथ हुआ। By the mercy of Srila Prabhupada and his representatives. और यह कृपा है श्रील प्रभुपाद जी और उनके पति। So, when this transcendental message penetrates their hearts, तो ये जब दिव्य उपदेश उनके हृदय में उतरेगा, they will certainly feel gladdened. वह निश्चित रूप से सुख का अनुभूति करेंगे। They became not just happy, but ecstatic. केवल सुख नहीं, वह एकदम It's recorded on the आनंद की video. अनुभूति करेंगे। Can't miss it. You've got to watch that video. तो मैं बता रहा हूँ कि आप उस वीडियो को देखिए। And thus become liberated from all unhappy conditions. और इसी प्रकार जो है आप फिर जो है मुक्त हो जाएंगे जितने भी बंधन है उनसे। So the next Prabhupada's punchline we say, आगे जो है श्रील प्रभुपाद जी का मुख्य उद्देश्य है
Oh Lord, I am just like a puppet in your hands. That's the मैं concept. आपके हाथों में एक कठपुतली के समान हूँ। That's what this whole movement is based on. We are all ये जो पूरा आंदोलन है इसी के ऊपर आधारित है। puppets हम सब कठपुतली हैं of the Supreme Personality of Godhead and His pure devotees. भगवान कृष्ण के हाथों में और उनके शुद्ध भक्तों के हाथों में। But on the mundane level, puppet is not considered a good thing. लेकिन भौतिक स्तर पे जो एक कठपुतली है उसको बहुत महत्व नहीं दिया For जाता। example, the U.S. is famous for setting up puppet governments. जैसे कि यूएस जो है वह बहुत ही प्रसिद्ध है ऐसे सरकार बनाना जो कि In Central America, South America, you know. कार्य करे। Mostly they're all puppet governments set up by the U.S. वहाँ पे जो है मुख्य रूप से कठपुतली सरकार ही मौजूद They take their marching orders from the United States. तो वो जो है यूनाइटेड स्टेट्स से अपने आदेश लेते हैं If they get puffed up, which they do, और जब वो गर्वित हो जाते हैं जो कि वो होते हैं and try to be independent, और जब वो इंडिपेंडेंट होने का प्रयास करते हैं तो उनको finish. So we see happen in Venezuela, you know, तो हम जानते हैं वेनेजुएला में भी big oil country. बहुत ही बड़ा वहाँ पे तेल का कारोबार है The leader was pocketing all the hundreds of millions of dollars. और जो वहाँ के नेता लोग थे वह बहुत सारे जो है So कमा रहे थे the U.S. just put in another leader that they could deal with because he was यूएस ने इसीलिए वहाँ पे कोई उनका नेता को हटा के कोई और नेता लगा दिया thumbing his nose at the U.S. and that was a big blunder. So he's वो जो नेता थे वो जो है अच्छे से व्यवहार नहीं कर रहे थे यूएस के साथ इसीलिए I think he's history now. तो ये जो है इतिहास में वर्णित So है puppet government is something negative. Puppet. तो वो जो है जो What? कठपुतली है जो सरकार वह एक गलत है To become a puppet of Krishna and the pure devotees लेकिन भगवान कृष्ण और उनके प्रतिनिधियों के हाथ is में glorious, glorious. ये बहुत ही सौभाग्य का कार्य है Oh Lord, I am just like a puppet हे भगवान मैं आपके हाथों में केवल कठपुतली in your hands. आपके हाथों में So if you've brought me here to dance, तो अगर आप मुझे यहाँ लेकर आए नृत्य करने के लिए then make me dance, oh Lord, make me dance मुझे नृत्य कराइए हे भगवान as you like. जैसा आप चाहें I have no devotion, मेरे में कोई भक्ति नहीं है nor do I have any knowledge, ना ही मेरे पास ज्ञान है but I have strong faith in the holy name of Krishna. लेकिन मेरे को बहुत ही दृढ़ विश्वास है भगवान कृष्ण के नाम के ऊपर I have been designated as Bhaktivedanta. मुझे उपाधि मिली है भक्ति वेदांत की Now if you like, अगर आप चाहें you can fulfill the real purport of Bhaktivedanta. आप इसका असली तात्पर्य दे सकते हैं इस नाम भक्ति वेदांत Signed, the most unfortunate, insignificant beggar, A.C. Bhaktivedanta Swami. तो ये जो है नीचे साइन किया हुआ है That is सबसे right. दुर्भाग्यवश बहुत ही कुछ We'll stop there. Jagaguru Sri Baba Ki Jai. Gopramanandi Hari Hari Bolo. दुर्लभ